Assalamu alaikum dear students of class 1. I hope you are fine and safe at your homes. I am your English teacher and I am going to guide you about your English homework. Our today's English homework is on our school workbook. We have to do page number 38. Before starting our work, please note that this work is for both group. Group A will do this work on Tuesday 28 September 2021 and Group B will do this work on Monday 27th September 2021. Today we will learn about the noun. A noun is a word used to name person, place, animal or thing. आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में और नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। So please open page number 38 so we can start our work. First you have to write date and day according to your group. Now see the caption. Caption is noun, naming word. नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं बिकॉज ये किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नेम को रिप्रेजेंट करता है। अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउ सी द एग्जांपल। You can see the first picture is of a woman. Woman is a person. Second picture is of a zoo and zoo is a place. Third picture is of a tree and tree is a thing. These are the three example of person, place और thing. इसी तरह हमें नीचे वाले जो कॉलम है उनमें भी हमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं पर्सन, प्लेस और थिंग की। नाउ सी द कैप्शन। सर्कल द नेमिंग वर्ड फॉर ईच पिक्चर एंड राइट द वर्ड। आपको डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और पिक्चर्स के नीचे नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। यू हैव टू रीड देम एंड यू हैव टू सर्कल द करेक्ट नेमिंग वर्ड फॉर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ अ पर्सन और पर्सन के नीचे जो नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं वो है बॉय और रन। बॉय इज़ द करेक्ट नेमिंग वर्ड सो वी हैव टू सर्कल बॉय हेयर। सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ अ प्लेस और प्लेस के नीचे उसका नेम दिया गया है पार्क या फन। Park is the correct naming word, so we have to circle it. Third picture is of a thing. A thing के नीचे है ride और bike. Bike is the correct naming word, so you have to circle bike here. Fourth picture is of a person. और person के नीचे जो naming words हैं वो है girl और hope. You have to circle the girl because it's a picture of a girl. Fourth picture is of a place. और नेमिंग वर्ड्स हमारे पास हैं सन और स्कूल। स्कूल इज़ द करेक्ट नेमिंग वर्ड सो वी विल सर्कल स्कूल हेयर। सिक्स्थ पिक्चर इज़ ऑफ अ थिंग दैट इज़ कॉम्ब सो यू विल सर्कल कॉम्ब हेयर। In that way you will complete this work. Please do your work neatly and carefully. I hope you understand today's lecture. Thank you so much for watching. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.